नमस्ते सभी को। हम आपका स्वागत करते हैं डिजिटल नारी ऐप के वर्चुअल लॉन्च पर, जो एक पेनियरबाई की पहल है महिलाओं को समाहित बनाने और शक्ति प्रदान करने की दिशा में। सबसे पहले मैं सभी महिलाओं का स्वागत करती हूँ जो देश के अलग-अलग भागों से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो अपने स्वरोजगार की यात्रा को शुरू कर चुकी हैं और अपने समाज में परिवर्तन की रचक बनने की इच्छा रख रही हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। इसके अलावा हम स्वागत करते हैं हमारे ये अद्भुत पैनल के लिए, जो आज के विचार मंच में हमारे मार्गदर्शी रूप में होंगे। इस पैनल को मॉडरेट करेंगे आभा बकया जी, जो फाउंडर है लेडीज हु लीड की और एनडीटीवी प्रॉफिट ब्लूमबर्ग बिजनेस टुडे की पूर्व वरिष्ठ पत्रकार है। स्वागत है आभा जी आपका। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चर्चा को शुरू करें और पैनल के बाकी सदस्यों का स्वागत करें। ओवर टू यू आभा। Thank you so much. And it's my pleasure to be hosting this fantastic panel today. We're talking about empowerment, and who better to do that than our esteemed guest. Joining us, Ms. Dhruvi Shah, Executive Trustee and CEO at Axis Bank Foundation. Ms. Rajashree Joshi, Program Director, BAIF Development Research Foundation. Ms. Swati Chowdhary, VP Network Development and Advocacy, Women's World Banking, South Asia. Ms. Bharati Joshi, Chief Program Officer at Grameen Foundation, India. Ms. Nazim Sheikh, Associate Program Director at Swayam Shikshan Prayog. And Ms. Shilpa Rao, Lead Gender and Finance at RBIH. Jayanti, as you all know, leads marketing at PayNearby, and it's great to have her on this panel. Probably more apt as well, Jayanti. But let me start with Dhruvi, ma'am, and understand from you, what does empowerment mean to you at a personal level? And what do you feel that we can do in order to really uplift more women at the grassroots level? It's a simple question, but simple questions are sometimes very difficult to answer. I've been thinking about what is empowerment. So one, it's a learning journey. It's a journey of self-empowerment and self-realization. And I've been fortunate enough to have opportunities that have equipped me to empower myself. And I think what I believe in, as a result of many things that have happened, I feel empowerment is about making choices. And it's also important to be able to take responsibility for the choices you make. So I think that's what empowerment means for me at a very personal level. Ms. Rajashree, let me bring you in as well. Let's get your take on it too. Thank you for inviting me on this panel. And in terms of challenges, I think there are several challenges when we are talking about, in general, women entrepreneurship, and also mainstreaming women for various activities of economic empowerment. And I think the challenges are of there are social, economic, technological challenges that are also there. And I think there are several challenges of first generation entrepreneurs and nano entrepreneurs. So they have their own set of challenges. And in general, I think the access to technology, access to knowledge, and access to some of the resources is a major challenge I feel that women are facing, and especially this is true for rural women. Let me bring you in as well, Swati, and get a sense from you, because in the kind of work that you've done already, are you finding a changing narrative when it comes to empowerment? Are you finding that perhaps that, when you're looking at advocacy, that people are becoming a little bit more knowledgeable about what's required in order to really make a difference? So thank you, Abha. I think it was nice the way you started, because empowerment is quite personal, and all of us have more nuanced definitions. But at Women's World Banking, when we look at empowerment, we're looking at we follow the Martha Chen framework of economic empowerment, and I'll just briefly touch upon it, because I think what it tells us is just two very basic lenses. One is in terms of resources, in terms of economic assets, and agency in terms of power and participation. And therefore, women through the continuum, how do we measure
it. If I may interrupt for a minute, there are ladies, Sakhis joining us from all across the country. And if we could talk in a mix of Hindi and English, we probably will reach a wider audience. Sure. Comments. Bharati, let me come to you. And आप बताइए बिकॉज आप तो बहुत आपका काम ग्रास रूट लेवल्स पे बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी लेडीज़ के साथ आप लोग काम करते हैं, उनको अपलिफ्ट करते हैं, उनको पावर देते हैं, तो आपको क्या दिखता है अपने काम में एंड कितना इम्प्रूवमेंट हो चुका है पिछले कुछ सालों में? सो थैंक यू। एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट मैं एक टेक दूंगी। पहले तो एज ग्रामीण हम लोग एम्पावर शब्द को उस तरह इस्तेमाल नहीं करते, ओके, क्योंकि द क्वेश्चन वी रेज इज हु आर वी टू एम्पावर others, right? That question we raise. So I think it's a matter of word, but all of us are on the same plane, but just word को मैं clarify करना चाहूँगा। इनफैक्ट जब भी फील्ड में हमारे टीम मेंबर्स के साथ, इवन हमारे ग्रास रूट वर्कर्स के साथ, लेडी वर्कर्स के साथ या कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, तो उल्टा क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, कौन किसके पास अभी ज़्यादा पावर है? आई हैव अ जॉब, आई फील सिक्योर्ड, राइट? पर जो वुमन एंटरप्रेन्योर बनी है उसमें ज़्यादा रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, मुझसे ज़्यादा ड्राइव है, ठीक है? तो वो क्वेश्चंस हम हमेशा सामने रखते हैं। तो जहाँ वो हैं, जो अभी जो स्वाति ने बोला, ध्रुवी ने बोला, वो सब पॉइंट्स बड़े रेलेवेंट हैं। स्टार्ट फ्रॉम वेयर दीज वीमेन आर, कहाँ हैं, कहाँ वो जाना चाहती हैं और कहाँ तक जा सकती हैं, ये मैपिंग हमको क्लैरिटी पहले ज़रूरी है, बिकॉज सबका लाइफ स्टोरी, सबका विजन सेम नहीं है, और ये गलतियां हम लोग भी करते हैं, फिर भी सीखते हैं, फिर गिरते हैं, फिर सेम गलती भी करते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि ब्रीफली ये कहूँगी कि ये इनेबलमेंट का एक्सरसाइज है। सो नॉट टू ड्राइव द डेफिनेशन ऑफ एम्पावरमेंट फ्रॉम आवर साइड, बट ये समझना कि कोई महिला जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ गई है, डिस्ट्रेस सिचुएशन है या कल को वो एक्चुअली स्टार्टअप खोलने वाली है, खोलना चाहती है, खोल सकती है, ये एस्पेक्ट क्लैरिटी के साथ ही कोई भी काम हम लोगों को एज इंटरवेंशनिस्ट डू नो हार्म के व्यू से करना चाहिए, ये हम लोगों की सोच है। सो आई विल स्टॉप हियर, थैंक यू। नो, इट्स लवली, आई थिंक इट्स सुपर इम्पैक्टफुल, और इस पे हम तभी थोड़ा और बात भी करेंगे, बट लेट मी गेट Naseem, Shilpa and Jayanti also for their comments. Let me go to Shilpa first. Shilpa, why don't you jump in here as well? So I think, everyone on the panel has already elaborated what empowerment means personally to them. So I won't get into that. And I think, I'm here more representing RBIH's ad. So maybe I will come in from the perspective of how RBIH thinks about empowerment of women, right? We as an institution have a very simple mandate. It's a one-line mandate. It's called frictionless finance for 1 billion Indians, right? And my mandate as somebody who leads the gender and finance vertical is frictionless finance for all women in India. And that's what I achieve to do in all of the projects, all of the work streams that I'm looking after. How do we ensure we give access to frictionless finance to women, so then they can use the finance to do whatever they want to do. Again, it's not our job to define what is empowerment for them, but I think we do believe that access, usage and quality of good finance is a stepping stone for any woman, for an entrepreneur, for a homemaker, for for somebody who's supporting their household. I think access to finance becomes very important. How do we define frictionless finance? It's 3 things. If we, through our work, can enable access to finance where she wants it, when she wants it, and however she wants it, I think we've done a small bit in ensuring that, we are giving all the necessary tools for women in the last mile to then take and fly with it. So I'll elaborate maybe a little bit on that later. So that's RBIH's view. My view, just a very quick addition, is I think ultimately it's to have agency in the choices that I make. It's not to be told what I need to do, what choices I need to make, whether I can work or not, how much I can spend, what I can buy. I think for me, empowerment is freedom and it's choice. So yeah, I'll stop there. Okay. Lovely. Naseem ma'am, can we get you in as well? आपका क्या? Yes. मेरा ये मानना है कि एम्पावरमेंट मेरे लिए यह कॉन्फिडेंस की बात है। अगर किसी भी महिला में वो कॉन्फिडेंस है तो वो अपनी पूरे पोटेंशियल को, अपनी एबिलिटी को
चॉइस वॉइस और एक्सेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विदाउट कॉन्फिडेंस हम कुछ नहीं कर पाते। और वो फैमिली के अंदर हो या वो बिजनेस के साइड हो, अगर जब तक हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं ये मतलब बाकी सब चीजें एम्पावरमेंट में बहुत जरूरी है, एजेंसी वगैरह, लेकिन उस महिला को अपनी बात आगे रखने का कॉन्फिडेंस अगर उसमें है तो मेरा ये मानना है कि एम्पावरमेंट इज ऑल अबाउट फॉर मी इज confidence, and how that women use that confidence to access, make voice and choice for her social issues, to address the social issues, as well as to earn make more money for her survival or for her family survival. Yes. Jayanti, I'd love for you to come in as well, because you've been instrumental in putting this panel together, and I know that you're driven by a purpose at PayNearby as well. So, what does empowerment mean to you, and how are you living this mission? So first of all, a big thank you to every inspiring lady who's been a part of this panel. I mean, we are a young organization trying to make an impact in this space, and just the opening statements have been such a guiding light for us. Empowerment at PayNearby, the way we look at empowerment is the ability to make our own choices, right? If we can be participative, and I'll try and move to Hindi. I'm a typical Bengali who falters in Hindi, but I'll try and speak in Hindi. कि हर महिला अगर अपना डिसीजन खुद ले पाए और वो आर्थिक स्वच्छलता, वो आत्मनिर्भरता उसके पास हो कि वो जो डिसीजन लेना चाहे अपने लिए और अपने परिवार के लिए, वो क्षमता उसमें आए, उसको हम सही मामले में एम्पावरमेंट बोलना चाहेंगे। एज समवन सेड कि वो आज कहाँ है, कहाँ जाना चाहते हैं, उसका पोटेंशियल कितना दूर जाने का है, वो सब निर्भर करेगा अगर वो आत्मनिर्भर है और वो डिसीजंस खुद ले पाए। So for us, empowerment is the ability to generate employment for yourself and the ability to make decisions because you have the financial independence to make those decisions. Thank you so much. That was, it's very beautifully articulated. Now let's actually get into the programs that you look at. And, if I could have examples from all of you in terms of some of the things that you've seen working on ground, कौन से प्रोग्राम्स का इम्पैक्ट आपको दिखता है, जो आपको लग रहा है कि they've been productive and are worth expanding on? Any examples you can give us to describe the kind of grassroots impact that you've either been part of or have seen taking place would be wonderful. So Dhruvi, let me come back to you. I know you've been patiently waiting. So maybe you could kick this off. It was lovely to hear everybody's perspective, and it's such an expansive topic. So in terms of work, what we've learned over the years is we support income enhancement for rural families, and we recognized very early on that women are a very critical part of rural livelihoods. I think knowledge has been the biggest factor that, and these are stories that we hear from the ground, is these are stories that we hear from the men, is that our women now know more enough to teach us. It's a very it's an indication that how the change in the position of women in the family, when recently heard that a woman said that my mother-in-law would not support me to do anything, but when a neighbor comes home to take my advice on agriculture or goatry, is when my family starts seeing me differently. And there are thousands of such stories, and I see Bharti smiling because she's also had similar experiences. And it's a combination of things, right? It's to create knowledge and create platforms, create knowledge, equip capacity building. So it's a combination of things, and it happens very fast with women. So you need to find those role models in the village. You need to find in any community, to be honest. And there are, like I said, there are many such examples. Bharti, why don't you first, share perhaps how you are seeing the impact on ground, and if you'd like to add to what we just heard from Dhruvi. So I think we have all had very many experiences. बहुत ज़्यादा diverse भी होगा. So we work in both
सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज, एंड एक्सपीरियंसेस थोड़े डिफर तो करते हैं उसमें दोनों में. देन पॉइंट आता है कि विमेन इन द होल मार्केट प्लेस, उस मार्केट प्लेस में वो महिला अकेले नहीं है, अनटिल अनलेस वो सिर्फ एक लोकल गांव में ही उस प्रोडक्ट्स कैटर करती है. तो पूरी वैल्यू चेन में जितने भी एक्टर्स हैं उनको एक तरह का जैसे कॉन्स्टलेशन होता है वैसे आपको पूरा फिटिंग करना पड़ता है. ये हम लोग प्रोग्राम में करते हैं कि अगर ये एंटरप्रेन्योर है, इसको इनपुट्स के लिए इस तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ काम करना है तो उनका एंगेजमेंट, आउटपुट्स यहाँ जाएंगे तो उसका वेयर हाउसिंग से लेकर ट्रांसपोर्ट सारा देखिए. फिर एक पॉलिसी रेगुलेटरी इंटरफेस है, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, कौन सी से उसको फ़ायदा मिल सकता है. तो ये पूरे एस्पेक्ट पे एज अ पूरा सौर मंडल की तरह काम करने से ही कुछ काम आगे बढ़ता है, ऐसा हमारा एक्सपीरियंस है. और वुमेन के लिए जहाँ तक एंटरप्रेन्योरशिप का है, ये मैं छोटा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी. रूरल एरियाज में हमने देखा है कि एक होता है कि हमारा सैंक्शन प्रपोजल, 5 ट्रेनिंग 6 बजे से या 4, हम शाम को भी करेंगे तो आना है, 2 घंटे 4 घंटे आपको काम करना है इतने घंटे. बट वो उनकी एंटरप्रेन्योरशिप सक्सेस की डेफिनेशन नहीं है. उसके लिए है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम, वो वैसे ही टाइम पुअर है, अगर हम उसमें भी उसको बांध देंगे प्रॉब्लम होगा. सो उनका क्या कंट्रोल ओवर टाइम आ रहा है, कंट्रोल ओवर चॉइस ऑफ कस्टमर्स, प्रोडक्ट सर्विस. आप कहेंगे यही प्रोडक्ट बेचो, सैनिटरी नैपकिन हमने ई कॉमर्स में डाला है, वो कहेगी नहीं मेरे को ये नहीं, मेरे को ये प्रोडक्ट से डील करना है. जो हम लोग अपने प्रोजेक्ट के स्ट्रेट जैकेटेड उसमें कभी कभी हैंडल नहीं कर पाते. तो कैसे हम वो फ्लेक्सिबिलिटीज सोच कर कि ये चॉइसेस, इट्स ऑल अबाउट, सही कहा स्टार्ट में जो कॉलीग्स ने कहा, इट इज़ ऑल अबाउट गिविंग हर चॉइसेस, to allow her choices, to give space, allow her to design her own program. तो वो एक चैलेंज है, हम लोग भी उससे स्ट्रगल करते हैं, लेकिन आई थिंक दिस इज हाउ वी कीप लर्निंग एंड मूविंग फॉरवर्ड. सो आई विल स्टॉप हियर. Okay, Shilpa, let me get you in as well. How are you seeing things on ground, and if you can also give us examples of really how some of these programs can be transformative. No, absolutely. Thanks, Abba. So inspiring to hear, from everybody here. In my work in the past 1 year, I've focused on gender and finance and how to, use finance as almost like a catalyst in a woman's development journey and growth, right? So that's kind of been my lens. And, the more field research we do, the more women we meet, the more, the more we spend time on the field and understand these micro and nano entrepreneurs. One realization that's come to all of us is that they are rock stars. They are rock stars. They don't need much from you. All they need is a system which enables them to empower themselves in as little friction and with as little friction as possible, and then they will do the rest. So we really need not do much other than unlocking certain barriers and certain issues which exist in the system today. I'm talking particularly from an access to finance perspective, right? And in this, the one movement which inspires me every day and all of us every day to come to work is the self-help group movement. And the 100 million, women nano entrepreneurs that exist on the ground today, and the actual impact this massive rural infrastructure has in the last mile. We were seeing statistics the other day. It works out to something like 20% of all adult women in India belong to SHGs. That's the power of the movement. It's been around for 30 years. And it's done wonders in terms of providing access to, mental health, channels for women to get together and talk about things that bother them. So I think the SHG movement is something that we believe is one of the strongest pillars. It already exists. And, the more we can do to empower, this movement, I think the more we can do to really empower women in the last mile. No, I think it's brilliant. I think we've covered, of course, the fact that all of you are doing your bit to run programs to uplift women, but what's also coming through in this conversation is the number of women who genuinely want to be entrepreneurs and want to be empowered and want to be financially independent. And I love the statistic that you gave, 22%, because that's phenomenal. It just shows you of the kind of power that this base has in our country. Rajashree, if I could come to you as well and, understand a bit more about your program that you run and the kind of advocacy that you do, and, really how you feel enabling more such women will create a corresponding impact when it comes to the economy, when it comes to growth. Are we already seeing that momentum?
Yeah. So, yeah, thank you, Abha. And I would be reflecting upon the kind of work that BAIF has been doing. So, BAIF is almost 5 decades we are in the field, and we have more than 4,000 SHGs that we are working with across India. And we consider women as equal partners in development. And most of our work, even before we started talking about entrepreneurship, our focus is on livelihood creation. And I think that is very important because in India it is essentially family farming. In the light of that, BIOF has introduced several such models, focusing on farm women especially, because the moment we start talking about entrepreneurship, I think the focus is on urban kind of women. But I think even in rural areas and even farm women can become good entrepreneurs, and we have several such examples. I think what has worked for BIF is, one is we have built upon their inherent knowledge systems. For example, we have worked with tribal women, and we have shown an entrepreneurship model where they are selling the seeds of indigenous vegetables, and this is something only tribal women can do because they have very good knowledge about the traditional seeds, indigenous seeds. So now they are earning in lakhs, and their seed packets are being sold like hotcakes. The last example I will give is in Gujarat. We have started something called Nahari, which is indigenous cuisine corners, and these are again the food system related knowledge that these women have. So what I'm trying to say is there are a lot of things that are undergoing changes in rural areas. There are several opportunities for entrepreneurship when we are talking about farm, off farm, and non farm type of livelihoods or entrepreneurship. And there is an ecosystem by way of like digital ecosystem, government pro women policies like this Lakpati Didi that Honorable Prime Minister Sir has introduced. I love how all of you are adding your own unique perspective, and each comment is really helping to bring out the layers and the depth of the amount of work and impact that you're creating. And I think that's really important. Naseem, let me bring you in as well. Naseem's already ready. She's already unmuted herself. She's like, I'm the last one left. Please go ahead. हमारे केस में जैसे स्वयं शिक्षण प्रयोग ये महिलाओं के साथ महिलाओं के लिए ही काम कर रही है, और हमारा ये मानना था कि जब तक महिला इकोनॉमिकली एम्पावर नहीं होती, उसके सोशल कंडीशन या उसकी जो सोशल व्यवस्था है समाज में वो चेंज नहीं होती। और जैसे सभी भारतीताई ने बताया, उसका इकोसिस्टम उसके फैमिली से शुरू होता है। जब तक उसके फैमिली मेंबर्स उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे या उसके फैमिली मेंबर्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो बाहर का कोई नहीं सपोर्ट करेगा। और ये भी हुआ है कि जो महिला को घर में उसके पहचान नहीं है, उसको It's gone on mute again. एम्पावरमेंट के काम में जब वो इन्वॉल्व होती है, जैसे वो कोई लाइवलीहुड शुरू करती है या सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए कोई एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम शुरू करती है, तो उसकी जब समाज में पहचान होती है, उसके ग्रुप में पहचान होती है, तो फिर घर में भी उसका स्टेटस चेंज होता है। तो ये 2-वे प्रोसेस है। कभी कभी घर से शुरू होता है इकोसिस्टम, कभी कभी कम्युनिटी से शुरू होता है। तो हमको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसकी जो जिंदगी है या उसकी जो परिस्थिति है, उसके हिसाब से हमको प्रोग्राम करना पड़ता है। तो हमने हमारे केस में स्वयं शिक्षण प्रयोग में हम ये दोनों इकोसिस्टम को बनाने की कोशिश की है कि वो किस तरह से अपने घर में, अपने समाज में, और जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे पंचायत है, सरकारी अधिकारी हैं, बैंक है, उनके साथ वो किस तरह से काम करेंगे। और ये सब करने में उन्हीं के गांव से कोई रोल मॉडल महिला आगे आके उनको हेल्प करेगी, तो वो बहुत ज़्यादा ही मतलब एक बहुत ही इम्पैक्टफुल ये है कि हर गांव में अगर लीडर्स खड़े हो जाएंगे तो वो 10 नए महिलाओं को हैंड होल्ड कर सकते हैं, हर नए महिलाओं को सपोर्ट कर सकते हैं। एन अपॉर्चुनिटीज आर देयर, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन उनको एक इनाबलिंग इन्वायरमेंट देना और इकोसिस्टम को कनेक्ट करने का जो फैसिलिटेशन का रोल है, हमारे जैसे आप जैसे सब लोग मिलके अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली वीमेन इकोनॉमिकली एम्पावर भी हो जाएंगे, और हमारे देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको भी चेंज करने में वो सबसे बड़े
स्टेक होल्डर का रोल प्ले कर सकते हैं। Absolutely. Exciting. It's a very exciting time. Chowdhary, would you like to add anything here in terms of, the kind of role women can play in the economy? हमने सभी ने बोला है कि हम मानते हैं कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एक बड़ा हिस्सा है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, राइट। द एबिलिटी टू मेक अ चॉइस वो तभी आता है जब हम फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और वो चॉइस ले सके। और हम सब जो इस स्पेस में काम कर रहे टुवर्ड्स मेकिंग वुमेन फाइनेंशियली एम्पावर्ड, हमें वो 3-4 चीज़ें जो भारती मैम ने कहा, मतलब इट जस्ट फिट्स राइट इनटू इट, राइट। कि आज के दिन में जो वो रूरल लेडी है वो ऑलरेडी 1000 काम खुद कर रहे हैं, ठीक है। तो वो 1000 काम में वो आप उनको और एक काम बोल रहे हो, भले ही वो 1000 काम नॉन पेड काम है, पर वो पेड काम जो वो आप उनको दे रहे हो वो 1001 काम है उसके लिए। तो द कन्वीनियंस ऑफ टाइम कि वो अपने हिसाब से वो कर पाए, वो एक बहुत बड़ा चीज़ है कि हम उसको ऐसे सॉल्यूशंस दे जो वो अपने हिसाब से अपने टाइम जब हो तब वो काम कर पाए, ऐसा काम दे जो वो अपने घर से कर पाए। Sometimes, and we all spoke about it, right, that going outside the home is a limitation, कि इनकम जो अपॉर्चुनिटी एनहांसमेंट अपॉर्चुनिटी है अगर उसको घर से करना है वो काम कर पाए। And the third thing that she mentioned, which also fits the bill, that let's not force a product on her, कि वो choice of product भी वो खुद ढूंढ पाए कि हाँ मेरे पास वो choice है, मुझे बैंकिंग देना है तो मैं बैंकिंग दूँ, मुझे ई कॉमर्स देना है तो मैं ई कॉमर्स दूँ, मुझे जो सही लगे और जो मेरे एरिया में मुझे नीड लगे उस हिसाब से मैं लोगों तक वो काम पहुंचा पाऊँ। तो I think, I mean, like she said, I mean, it struck a chord with us because principally this is what we stand for. हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे साथ जो महिलाएं जुड़े हुए हैं और हमने लास्ट कुछ सालों में 2-3 सालों में काफ़ी काम किया है इस स्पेस में। तो वी वर्क विद अ लॉट ऑफ state livelihood missions, whether it is in Uttar Pradesh, Rajasthan and elsewhere. We have over 10,000 women who work with us. 10,000 से ज़्यादा सखियाँ आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। 750-800 करोड़ की बिजनेस हम साल भर कर रहे हैं, जहाँ पे इन सखियों को 10-15 हज़ार कमाई हर महीने हो रहा है, ठीक है। पर ये करने के लिए हमने जो सीखा है कि जो मैम ने बोला है कि हम उसको एक ऐसे आसान समाधान दे जो वो अपने घर से कर पाए, अपने टाइम पे कर पाए, अपने मन चाहा सामान वो चूज कर पाए। तो that is what we stand for. And in terms of the personal anecdotes, there's a lady from UP, and she's one of the ladies who's doing very well in our ecosystem. So when she came to our system, us time pe, she was a single mother and we met her and she had 2 small kids and she didn't know the way forward for her because, you know, societal barriers, how to set up a shop, all of that were new to her. But today she is earning more than 15-17K a month. She is sending her children to school. So she's been able to absorb that economic shock that came her way suddenly. And that is the power of the system, right? हम ऐसे कैसे समाधान दें जो सहज हो, जो उनको फ्यूचर के लिए रेडी कर पाए, ठीक है। एंड इन अ few minutes we will probably be launching the Digital Naari app. So we've been working in this women empowerment space for a while. Our endeavor is to now create an umbrella, a brand that is focused to work towards that end. And we have had some history, we have had some learnings that we want to now implement. Like you all said, 22% in the SHG groups, right? We would want to work with partners like you. We have a solution. We need your strength. We need your distribution. Now to reach out to as many women, क्योंकि हमारे साथ काम करने के लिए उसको बस एक मोबाइल चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद जो भी चाहिए उसको कन्वीनियंस ऑफ टाइम चाहिए, उसको कन्वीनियंस ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, उसको कन्वीनियंस ऑफ स्पेस चाहिए, घर से काम करने सभी कुछ उसके चॉइस के हिसाब से वो कर पाएंगे। पर वी नीड पार्टनर्स लाइक यू to start working with us so that we can reach the last mile and empower this woman to a more empowered journey. Thank you so much. And it was just so wonderful to see how passionate all of you are your work and to hear some of the anecdotes of how this is really moving the needle on ground. Thank you for your time and for joining us today. And with that, Chowdhary, I'll hand over back to you. Thank you so much. Thank you, Abha, for moderating this session for us. It was a real pleasure. And thank you to all the inspiring ladies. Like I said at the starting, we are a young organization wanting to make our impact in that space. And your guidance has really been
a lot of help, motivation, and we truly appreciate it. In closing comments, like Bharti ji has said, कि ये जो सखिया है उनको ग्रास्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. If you teach them, they will grasp it easily, right? And like Swati said, it is an untapped gold, right? They're waiting for us to go and help them out there. That opportunity is waiting for us to explore. So हमारा भी, and our CEO, who unfortunately couldn't attend today, Anand, keeps on saying कि 50% of the gross domestic reserve जो है वो हमारे women hai, and let's unlock the potential to take India to the next level. So thank you so much for your insights, and let's all work together. Like I said, we are looking forward to work with each of you towards our goal of making more Lakpati Didis, of ensuring that each woman have the power to decide her own future, to make her own living. Thank you once again. And with that, I would like to call Alok Jha, who leads our livelihood mission program, to launch the Digital Naari app. Thank you so much once again. Thank you, Jayati. And it was so lovely to see all of you, because as they say, one woman empowered stands for all the women. Okay, and 18%, I was reading a CII report, 18% of GDP is contributed by women today. And imagine if this increases, it expands quite a bit. But it was lovely to see everybody talking about empowerment, built through self-reliant. Self-reliance comes through the confidence. Confidence comes through enablement, and enablement comes through the financial liberation. And that is where PayNearby जो है आज की तारीख में हम लोगों ने बहुत काम किया इसमें. पिछले 1-2 साल में हमने स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ काम किया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ काम कर रहे हैं. हम लोग अर्बन लाइवलीहुड मिशन के साथ भी काम कर रहे हैं. आरबीआई इनोवेशन हब के तरफ से फ्रिक्शनलेस सेविंग के लिए भी उन्होंने हम साथ में मिलकर काम कर रहे हैं. और इन सब का समन्वय जो है एक बहुत बढ़िया हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, जिसको हम डिजिटल नारी कहते हैं. ये सारी वुमेन को समर्पित है, और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऐप के द्वारा लाइवलीहुड अपनी बढ़ा सके. फर्स्ट इनकम या सेकंड इनकम जैसी भी हो, इसमें हमने बहुत सारी सर्विसेज इकट्ठा कर रखी हैं. Like all of you said, it is all about choices, right? So they can choose जो उनको comfortable है. बैंकिंग से लेकर के, ट्रैवल से लेकर के, ई-कॉमर्स से लेकर के, इंश्योरेंस से लेकर सारी तरह की सुविधाएं उसमें बिल्ट इन है. तो वो ऐप डाउनलोड करके और जो है वो अपना कार्य शुरू कर सकती है. जैसे गायत्री ने बोला, it is very simple. So I hereby launch the Digital Naari app with you, and with just one reel which I would like all of you to see. आप सब देखिए इस रील को, ये सशक्तिकरण का एक बढ़िया वीडियो है. पे नियरबाई के डिजिटल नारी ऐप के साथ बैंकर दीदी बनके लखपति दीदी का सफर शुरू करें. भारत सरकार की लखपति दीदी पहल को साकार कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े भरोसेमंद नेटवर्क पे नियरबाई. डिजिटल नारी ऐप के साथ अब महिलाएं अपने क्षेत्र में आवश्यक बैंकिंग और डिजिटल सेवाएं आसानी से पहुंचाकर लखपति बनने का सफर तय कर सकती हैं. भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत पे नियरबाई को आजीविका मिशन चलाने की अनुमति मिली है. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कई अन्य राज्यों में आजीविका योजना के तहत लाखों महिलाएं डिजिटल नारी ऐप से सशक्त बन रही हैं. इस ऐप के साथ आप बन सकती हैं अपने एरिया की बैंकर दीदी, जहां आप नकद निकासी, बैंक अकाउंट खोलना, मनी ट्रांसफर, रिचार्ज, बीमा, लोन्स और ई-कॉमर्स जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं लोगों तक आसानी से पहुंचा सकती हैं.
पे नियर बाई, MPCI और कई बड़े बैंक्स जैसे यस बैंक, एक्सिस बैंक, RBL, इंडसइंड का भरोसेमंद साथी है। पे नियर बाई के साथ जुड़े हुए 7.5 लाख से अधिक दुकानदार लाखों की कमाई कर अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। आप भी लखपति दीदी बनने के लिए अपने फोन से पे नियर बाई डिजिटल नारी ऐप डाउनलोड करें और आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ समाज में एक नई पहचान बनाएं। थैंक यू सो मच। आई थिंक ये जो वीडियो है सारे डिस्कशन को जो मैं कहना चाह रहा था उसको समराइज कर देता है, और इससे हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो जर्नी है, हम कुछ लोगों के, आप लोगों के साथ काम भी कर रहे हैं, जैसे भारती जी के साथ हम बहुत जुड़ के काम कर रहे हैं, RBI के साथ हम काफी जुड़ के काम कर रहे हैं, स्वाति जी के साथ भी हम एक पोर्शन पे काम कर रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य जो है 10 लाख महिलाएं को सशक्त करना, उस मिशन में आप सबके साथ हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आई विल इनवाइट शिल्पा टू गिव द closing comments on this program. Thank you so much. Thank you, Alok. No, it's really nice to see कि sorry, मैं हिंदी में बात करती हूँ, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, please forgive me, but I'll try my best. फर्स्ट ऑफ ऑल इस पैनल को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत अच्छा लगा। इन सब महिलाओं को सुन के बहुत इंस्पिरेशन मिला मुझे भी, और बहुत अच्छा लगा कि ये इनिशिएटिव फाइनली लॉन्च हुआ है। And I really hope that it takes off. It helps in increasing the number of women BCs on the ground. It helps in creating a real livelihood opportunities for many of these transactional BCs जो आज तक सिर्फ 1000, 2000 या 3000 रुपए कमा पा रहे हैं, उनको अगर हम 3000 से 10,000 तक ले सकते हैं तो आप PM के विजन को एकदम फुलफिल करोगे। And thanks to Anand and the PayNearby team for working with us very closely on this subject as well. हम और आप मिलके आपके डिजिटल नारी ऐप पे ही एक फर्स्ट टाइम एक सेविंग्स प्रोडक्ट बनाया है जो सिर्फ विमेन पे फोकस्ड है, और विमेन के लिए बनाया गया है, ताकि जो मैंने पहले बोला था, विमेन को जहाँ चाहिए, जैसे चाहिए और जिधर चाहिए उनको सर्विस मिले सेविंग्स के लिए। So I would urge everybody to explore that piece of the Digital Naari app as well, जो हमने बहुत रिसर्च करके सिर्फ women customers के लिए बनाया है, and वो एक goal based saving product है। So thanks to PayNearby for having the entrepreneurship and the energy and the enthusiasm to work on new ideas like this, which are not easy. आसान नहीं होता ये सब इंट्रोड्यूस करना, उसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए और थोड़ा क्रिएटिविटी चाहिए, जो हमें PayNearby के साथ मिला है। And I wish you nothing but great success in the Digital Naari mission. And of course, RBIH is always here to work with partners like you, partners like everyone on this call, to achieve the goal of frictionless finance for every woman in India. And we believe that's the only way we're going to get to a 5 trillion economy or a 10 trillion economy. You can't do that without half the population. So, let's all get our hands together to work towards that mission. Thank you so much for having us today, Alok and Anand. Pleasure is ours. So, Jayashree, over to you. Thank you, Alok. Thank you, Shilpa, for the encouraging words. Like you said, we are really looking forward to working with each and everyone in this panel and to make the vision and mission of 10 lakh Lakpati Didis come true, who are empowered enough to take their life decisions, who are empowered enough to make those financial calls that they should be taking. Thank you once again. जो सारी सखियाँ आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप डिजिटल नारी ऐप डाउनलोड करेंगे। आपको गूगल ऐप स्टोर में जाके डिजिटल नारी ऐप डाउनलोड करना है। उसके लिए खाली आपका जो आत्मविश्वास है वही चाहिए, आपका जो आगे बढ़ने का जिद है वही चाहिए, बस मोबाइल ऐप चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए इससे अपना आमदनी ज़्यादा बनाने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ऐप स्टोर में जाएंगे और डिजिटल नारी ऐप को डाउनलोड करेंगे और अपना जो एम्पावरमेंट जर्नी है वो और आगे लेके जाएंगे। Thank you once again to each and every one of you for this wonderful discussion today.
It's been our absolute pleasure to host this panel. Thank you.